श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 4 of Kishkinda Kandam, which has 35 verses. Hanuman inquires of Sri Rama the purpose of his visit to Pampa. Having narrated to Hanuman as urged by Sri Rama his life story up to his separation with Sita, Lakshmana tells him that it is on the advice of Kabanda they cultivate the friendship of Sugriva. Observing that Sugriva was in the same predicament as Sri Rama and was thus in need of his sympathy and goodwill, Hanuman resumes his real form and placing Sri Rama and Lakshmana on his shoulders, reaches Rashyamukh. आज हम किष्किंधा कांड के चतुर्थ सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 35 श्लोक है। लक्ष्मण का हनुमान जी से श्री राम के वन में आने और सीता के हर जाने का वृत्तांत बताना तथा इस कार्य में सुग्रीव के सहयोग की इच्छा प्रकट करना, हनुमान जी का उन्हें आश्वासन देकर उन दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाना। ततः प्रकृष्टो हनुमान् कृत्यवानिति तद्वचः श्रुत्वा मधुरभावं च सुग्रीवं मनसा गतः। श्री राम जी की बात सुनकर तथा सुग्रीव के विषय में उनका सौम्य भाव जानकर और साथ ही ये समझकर कि इन्हें भी सुग्रीव से कोई आवश्यक काम है, हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन सुग्रीव का स्मरण किया। Highly rejoiced to hear the aforesaid speech of Sri Rama as well as of Sri Rama's friendly feeling towards Sugriva, and to learn that Sri Rama too had some purpose in meeting him, Hanuman then mentally sought the presence of Sugriva. भाव्यो राज्यगमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः यदयं कृत्यवान् प्राप्तः कृत्यं चैतत् उपागतम्। अब अवश्य ही महामना सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजन से यहाँ आए हैं और ये कार्य सुग्रीव के ही द्वारा सिद्ध होने वाला है। He said to himself, attainment of sovereignty on the part of that high-souled Sugriva is sure to come about, as is clear from the fact that Sri Rama has come here with a purpose and the duty of accomplishing it has devolved on Sugriva. ततः परम संहृष्टो हनुमान् प्लवगोत्तमः प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्य विशारदः। तत्पश्चात बातचीत में कुशल वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अत्यंत हर्ष में भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले। Supremely rejoicing at the thought, Hanuman, the foremost of monkeys, thereupon replied as follows to Sri Rama, who was an adept in expression. किमर्थं त्वं वनं घोरं पम्पा काननमण्डितम् आगतः सानुजो दुर्गं नाना व्याल मृगायुधम्। पंपा तटवर्ती कानन से सुशोभित ये वन भयंकर और दुर्गम है। इसमें नाना प्रकार के हिंसक जंतु निवास करते हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? What for have you come with your younger brother to this dreadful forest of Dandaka, which is so difficult to access and is infested with birds of prey and deer of every description, though adorned with the woodlands encompassing Pampa? तस्य तत् वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः अचक्षसे महात्मानं रामं दशरथात्मजम्। हनुमान जी का ये वचन सुनकर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम का इस प्रकार परिचय देना आरंभ किया। Hearing the aforesaid question of Hanuman, Lakshmana, as urged by Sri Rama by means of gestures, spoke as follows about the high-souled Sri Rama, son of Emperor Dasharatha. राजा दशरथो नाम द्युतिमान् धर्मवत्सलः चातुर्वर्ण्यं स्वधर्मेण नित्यम् एवाभिपालयन्। विद्वान इस पृथ्वी पर दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो धर्म अनुरागी तेजस्वी राजा थे, वे सदा ही अपने धर्म के अनुसार चारों वर्णों की प्रजा का पालन करते थे।
ruling all the four grades of society from day to day according to the code of conduct prescribed for himself, there was a king Dasharatha by name who was full of splendor and fond of virtue. न द्वेष्टा विद्यते तस्य स तु द्वेष्टी न कंचन स तु सर्वेषु भूतेषु पितामहः इवापरः। इस भूतल पर उनसे द्वेष रखने वाले कोई नहीं था और वह भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। वह समस्त प्राणियों पर दूसरे ब्रह्मा जी के समान स्नेह रखते थे। None was inimical to him, nor did he for his part hate anyone. He was in fact another Brahma, the grandfather of the entire creation to all created beings. अग्निष्टोमादिभिः यज्ञैः इष्ट्वा अवाप्त दक्षिणैः तस्यायं पूर्वजः पुत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वह उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र है। लोग इन्हें श्री राम कहते हैं। He propitiated the Lord by means of a sacrificial performance, Agnishtoma, in which handsome fees was paid to the priests officiating in them. This prince is his firstborn son, called by the people by the name of Sri Rama. शरण्यः सर्वभूतानां पितुर् निर्देश पारगः ज्येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तरः। ये सब प्राणियों को शरण देने वाले और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में से ये सबसे अधिक गुणवान हैं। Fit to protect all created beings, he has fully carried out the commands of his father. He is the eldest of all Dasharatha's sons and is more qualified than all of them. राजलक्षण संयुक्तः संयुक्तो राज्य संपदा राज्यात् भ्रष्टो मया वस्तुं वने सा धर्म मिहागतः। ये राजा के उत्तम लक्षणों से संपन्न है। जब इन्हें राज्य संपत्ति से संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा कारण आ पड़ा जिससे ये राज्य से वंचित हो गए और वन में निवास करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ गए। भार्या च महाभाग सीता यानुगतो वशी दिनक्षये महातेजाः प्रभयेव दिवाकरः। महाभाग जैसे दिन का क्षय होने पर सायकाल महातेजस्वी सूर्य अपने प्रभा के साथ अस्ताचल को जाते हैं, उसी प्रकार ये जितेंद्रिय श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी सीता के साथ वन में आए थे। Endowed with the bodily marks of a king, he was just going to be invested by his father with the royal fortune in the shape of the office of the Prince Regent, when he was suddenly disinherited of his sovereignty and came here to live in the forest with me, followed by his consort Sita too. Even as the sun sinks below the horizon with its splendor at the close of the day, possessed as he was of extraordinary brilliance, and had fully controlled himself. अहम् अस्या वरो भ्राता गुणैर् दास्यम् उपागतः कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नामतः। मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं अपने कृतज्ञ और बहुज्ञ भाई के गुणों से आकृष्ट होकर इनका दास हो गया हूँ। I am his younger brother Lakshmana by name, who was lovingly drawn by his virtues to become his servant, appreciating as he does the services rendered to him and making much of even small services. सुखार्हस्य महार्हस्य सर्वभूत हितात्मनः ऐश्वर्येण विहीनस्य वनवासे रतस्य च रक्षसापहृता भार्या रहिते कामरूपिणा तच्च न ज्ञायते रक्षः पत्नी येनास्य वाहृता। संपूर्ण भूतों के हित में मन लगाने वाले, सुख भोगने के योग्य महापुरुषों द्वारा पूजनीय, ऐश्वर्य से हीन तथा वनवास में तत्पर मेरे भाई की पत्नी का इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले एक राक्षस ने सूने आश्रम में हर लिया। जिसने इनकी पत्नी का हरण किया वह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है इत्यादि बातों का ठीक ठाक पता नहीं लग रहा है। The spouse of my aforesaid brother, who is worthy of all comforts,
who deserves to be adorned even by the trio adored by all, that is Brahma, Vishnu and Shiva, and whose mind is set on the good of all created beings, nay, who is now totally bereft of all lordship and is devoted to a forest life, was carried off at a place where none was beside her by an ogre who was capable of assuming any form at will. That ogre, however, by whom his consort has been stolen away is not known. धनुर्नाम दिते पुत्रः शापात् रक्षसतां गतः आख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थो वानराधिपः स ज्ञास्यति महावीर्यः तव भार्या अपहारिणम् एवमुक्त्वा धनुः स्वर्गं विराजमानो दिवं गतः। धनु नामक एक दैत्य था जो शाप से राक्षस भाव को प्राप्त हुआ था। उसने सुग्रीव का नाम बताया और कहा, वानर राज सुग्रीव समर्थशाली और महान पराक्रमी है, वे आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस का पता लगा देंगे। ऐसा कहकर तेज से प्रकाशित होता हुआ धनु स्वर्ग लोक में पहुंचने के लिए आकाश में उड़ गया। There was a son of Diti by the name of Dhanu, Kabanda by name, who had by virtue of an imprecation assumed the state of an ogre. Sugriva, the powerful overlord of monkeys, was mentioned to us by him. He said that exceptionally powerful monkey will find out the ogre who stole away your consort. Saying so and emanating light all around, Dhanu rose to the skies on his way to heaven. एतत् ते सर्वमाख्यातं याथा तथ्येन पृच्छतः अहं चैव च रामश्च सुग्रीवं शरणं गतौ। आपके प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें ठीक ठाक बता दी। मैं और श्री राम दोनों ही सुग्रीव की शरण में आए हैं। All this has been narrated in all sincerity to you who inquired about it. Now, Sri Rama as well as myself have sought Sugriva as our refuge. एष दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य च अनुत्तमं यशः लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नातमिच्छति। ये पहले बहुत से धन वैभव का दान करके परम उत्तम यश प्राप्त कर चुके हैं। जो पूर्व काल में संपूर्ण जगत के नाथ संरक्षक थे, वे आज सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। Having given away all his riches to beggars while leaving Ayodhya for the forest and earned unsurpassed glory, and having been in the past the protector of the world, Sri Rama desires to have Sugriva as his benefactor. सीता यस्य स्नुषा च आसीत् अरण्ये धर्मवत्सलः तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुग्रीवं शरणं गतः। सीता जिनकी पुत्र वधु है, जो शरणागत पालक और धर्म वात्सल्य रहे हैं, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र शरणादाता श्री राम आज सुग्रीव की शरण में आए हैं। Himself affording shelter to the others and fond of virtue, the son of King Dasharatha, who was fit to protect others and whose daughter-in-law was Sita, has sought Sugriva as his refuge. सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा गुरुर्मे राघवः सो अयं सुग्रीवं शरणं गतः। जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई श्री रघुनाथ जी पहले संपूर्ण जगत को शरण देने वाले तथा शरणागत वत्सल रहे हैं, वे इस समय सुग्रीव की शरण में आए हैं। The self-same Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, my eldest brother, whose mind is set on virtue and who was once not only fit to protect but actually protector of the whole world, has sought Sugriva as his asylum. यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुः इमाः प्रजाः स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादम् अभिकांक्षते। जिनके प्रसन्न होने पर सदा ये सारी प्रजा प्रसन्नता से खिल उठती थी, वे ही श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। That Rama, on whose being proprietus all these created beings remain constantly pleased, seeks the favor of Sugriva, king of monkeys. येन सर्वगुणोपेताः पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः मानिताः सततं राज्ञा सदा दशरथेन वै तस्य अयं पूर्वजः पुत्रस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः सुग्रीवं वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः।
जिन राजा दशरथ ने सदा अपने यहाँ आए हुए भूमंडल के सर्व सद्गुण संपन्न समस्त राजाओं को निरंतर सम्मान किया, उन्हीं के ये त्रिभुवन विख्यात ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की शरण में आए हैं। Sri Rama, the firstborn son, well known through all the three worlds of King Dasharatha, by whom in reality all the kings on earth, endowed with all kinds of virtues, were unceasingly honored every day, has for his part sought Sugriva, the lord of monkeys, as his refuge. शोगाभिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते कर्तुमर्हति सुग्रीवः प्रसादं सह यूतपैः। श्री राम शोक से अभिभूत और आर्त होकर शरण में आए हैं। यूथपतियों सहित सुग्रीव को इन पर कृपा करनी चाहिए। Sugriva, along with his troop leaders, ought in his turn to show his grace to Sri Rama, who is overwhelmed and stricken with grief and has sought Sugriva as his refuge. एवं ब्रुवाणं सौमित्रिं करुणं स अश्रुपातनं हनुमान प्रति उवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः। नेत्रों से आंसू बहाकर करुणाजनक स्वर में ऐसी बातें कहते हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कुशल वक्ता हनुमान जी ने इस प्रकार कहा। To Lakshmana, son of Sumitra, speaking as aforesaid in a pathetic tone accompanied with a flow of tears, Hanuman, who was an adept in expression, replied as follows. ईदृशा बुद्धिसम्पन्ना जिदक्रोधा जितेन्द्रियाः द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण दृष्ट्या दर्शनमागताः। राजकुमारों, वानर राज सुग्रीव को आप जैसे बुद्धिमान, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय पुरुषों से मिलने की आवश्यकता थी। सौभाग्य की बात है कि आपने स्वयं ही दर्शन दे दिया। Through good luck, people like you who are rich in wisdom have subdued their anger and mastered their senses, and who deserve to be seen by Sugriva, the ruler of monkeys, have fallen within the range of our sight. सही राज्याच्च विभ्रष्टः कृतवैरश्च वालिना कृतधारो वने त्रस्तो भ्रात्रा विनिकृतो वृषम्। वे भी राज्य से भ्रष्ट है, वाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई है, उनकी स्त्री का भी वाली ने ही अपहरण कर लिया है तथा उस दुष्ट भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत भयभीत होकर वन में निवास करते हैं। Through good luck, people like you who are rich in wisdom have subdued their anger and mastered their senses, and who deserve to be seen by Sugriva, the ruler of monkeys, have fallen within the range of our sight. Agonized and deposed from his throne, nay, actually deprived of his spouse and exiled by his elder brother Vali, Sugriva lives in the forest, greatly alarmed. करिष्यति स सहाय्यं युवयोः भास्करात्मजः सुग्रीवः सह च अस्मभिः सीतायाः परिमार्गणे। सूर्य नंदन सुग्रीव सीता का पता लगाने में हमारे साथ स्वयं रहकर आप दोनों की पूर्ण सहायता करेंगे। Along with us, monkeys, the said Sugriva, sprung from the lions of the sun god, will render help to you in tracing out Sita. इत्येवम् उक्त्वा हनुमान् श्लक्ष्णं मधुरया गिरा बभाषे साधु गच्छामः सुग्रीवम् इति राघवम्। ऐसा कहकर हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, अच्छा अब हम लोग सुग्रीव के पास चलें। Having spoken thus in a sweet tone, Hanuman softly said to Sri Rama, a scion of the Raghu, well, let us proceed to meet Sugriva. एवं ब्रुवन्तं धर्मात्मा हनुमन्तं स लक्ष्मणः प्रतिपूज्य यथा न्यायमिदं प्रोवाच राघवम्। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने उपयुक्त बात कहने वाले हनुमान जी का यथोचित सम्मान किया और श्री रामचंद्र जी से कहा, Having honored according to the rules of propriety Hanuman, who was speaking thus, the celebrated Lakshmana, whose mind was set on virtue, submitted as follows to Sri Rama, the scion of Raghuvamsha. कपिहि कथयते हृष्टो यथा अयं मारुतात्मजः कृत्यवान् सोऽपि सम्प्राप्तः कृतकृत्योऽसि राघव।
भैया रघुनंदन, ये वानर श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान अत्यंत हर्ष से भरकर जैसी बात कह रहे हैं, उससे जान पड़ता है कि सुग्रीव को भी आपसे कुछ काम है। ऐसी दशा में आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझे। Full of joy, the son of the wind god speaks aright. Sugriva too has some end to be achieved through you. Having arrived here at the right time, you have your object accomplished, O Sian of Raghu. प्रसन्नमुखवर्णश्च व्यक्तं हृष्टश्च भाषते नानृतं वक्ष्यते वीरो हनुमान् मारुतात्मजः। इनके मुख की कांति स्पष्टता प्रसन्न दिखाई देती है और ये हर्ष से उत्पल होकर बातचीत करते हैं। अतः मेरा विश्वास है कि पवन पुत्र वीर हनुमान जी झूठ नहीं बोलेंगे। Full of delight, Hanuman speaks unambiguously and with a cheerful glow on his face. The gallant son of the wind god would not tell a lie. ततः स सुमहाप्राज्ञो हनुमान् मारुतात्मजः जगामादाय तौ वीरौ हरिराजाय राघवो। तदंतर परम बुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी उन दोनों रघुवंशी वीरों को साथ ले सुग्रीव से मिलने के लिए चले। Taking Sri Rama and Lakshmana, the two heroic scions of Raghu, the aforesaid Hanuman, the extremely wise son of the wind god, thereupon sallied forth to meet Sugriva, the ruler of monkeys. भिक्षुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः पृष्ठम् आरोप्य तौ वीरौ जगाम कपिकुञ्जरः। कपिवर हनुमान ने भिक्षु रूप को त्याग कर वानर रूप धारण कर लिया। वह उन दोनों वीरों को पीठ पर बिठाकर वहां से चल दिए। Having abandoned the guise of a mendicant or recluse and resuming the form of a monkey and placing the aforesaid two heroes on his shoulders, Hanuman, a veritable elephant among monkeys, departed for Ashyamukh. सतु विपुलयशाः कपिप्रवीरः पवनसुतः कृतकृत्यवत् प्रहृष्टः गिरिवरम् उरुविक्रमः प्रयातः स शुभमतिः सह रामलक्ष्मणाभ्याम्। महान यशस्वी तथा शुभ विचार वाले महापराक्रमी व कपिवीर पवन कुमार कृत्य से होकर अत्यंत हर्ष में भर गए और श्री राम लक्ष्मण के साथ गिरिवर ऋषिमुख पर जा पहुंचे। Overjoyed like one whose object has been accomplished, that great hero among the monkeys, the noble-minded son of the wind god for his part, who has earned an extensive fame and was possessed of extraordinary prowess, proceeded along with Sri Rama and Lakshmana to Rishyamukh, the foremost of all mountains. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 4 in the Kishkinda Kand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदाम भर्तारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिराम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।